Hello students, today we will see the new concept accounting standards. Which is the meaning of accounting standards? Into these accounting standards, we write down our account into this AS, accounting standards. In India, in 21st April 1977, the accounting standards will be established. Start in India 21st April 1977. Accounting standards and international financial reporting standards. Into these institutes issue some accounting standards. We see into this lecture the meaning of accounting standards. Accounting standards are written policy documents issued by the experts and accounting bodies or government and other regulatory bodies are issued their standards. Into these standards we write down our accountancy reports. Accounting standards and IFRS, International Financial Reporting Standards, द्वारा अकाउंट write down किया जाता है. So, accounting standards are written policy documents issued by the experts, accounting bodies or government and other regulatory bodies are issued the accounting standards. Covering the experts are recognitions, measurement and treatment presentations and disclosure of accounting transactions and event in the financial statements. Nearby 9 nations are follow that standards. The country is Australia, France, then USA, Mexico, UK, Ireland, Canada, Germany, Japan and Netherlands are follow the rules of accounting standards and write down their accounting reports, write down their accounts. So into this accounting standards, it is a guideline. Accounting standards are give the guidelines and law and rules of maintaining our accounts, maintaining our reports into these standards. So these standards, it will be acceptable worldwide and internationally. So it should be established in India 21st April 1977. Into this our syllabus, in especially 11th Commerce, we see the 31st accounting standards are mentioned into this 11th Commerce bookkeeping and accountancy. जो important standards आपके हैं, जिस standards अंतर्गत जो branches of accounting आपके हैं, financial accounting, management accounting, cost accounting, तो we should see the 31st accounting standards into this syllabus 11th Commerce. So accounting standard will be acceptable worldwide and internationally. Accounting standards, the main function of this accounting standard, the accounting standard board is formulated as are the code and conduct imposed by customs. So into this accounting standards, we see the international financial reporting standards, Indian Accounting Standard Board, Institute of Chartered Accounting of India and Accounting Standard Boards. The ICAI जो इंस्टीट्यूट आपकी है, ICAI means the Institute of Chartered Accountant of India. The Council of Institute of Chartered Accountant of India consisted in accounting standards, Accounting Standard Board, 21st April 1977. In India, the law of land, the Company Act and other status of financial institute to be true and fair. So it is indicating the financial position, working result of companies. That is the accounting standards. Institute of CA, Institute of Chartered Accountant, established
in April 1977. An accounting standards board are established in April 1977, 21st April 1977. The main function of this accounting standard board, इसका जो मेन फंक्शंस था, जो मेन फंक्शन इसका होता है एएसबी का या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड का, is to be formulate the accounting standards. The main function of this ASB to formulate the accounting standards. Accounting standards को फॉर्मेट करना, लॉ एंड रेगुलेशन उस अकाउंट्स को मेंटेन करना, ये इसके पीछे उद्देश्य होता है. अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का आप क्या करते थे, रिकॉर्ड्स मेंटेन करते थे. मेन फंक्शन ऑफ दिस ASB फॉर full form accounting standard boards is to be formulate the accounting standards so that such standards will be established by Council of Institute of Chartered Accountant. Institute of Chartered Accountant established by Council of जो Institute of Chartered Accountant का. While the formulating the accounting standards, जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉर्मेटिंग करते हैं, एक सूत्र का उसमें लाते हैं, एक फॉर्मूले में उसको राइट डाउन करते हैं. तो फॉर्मेटिंग the accounting standards ASB will be give the consideration to the international accounting standards and try to integrate them the extent possible. It will be also take into the considerations and applicable law, customs and uses and business environment prevailing in India. So into this accounting standards, we see some important accounting standards in our 11th subject bookkeeping and accountancy. Nearby 31 accounting standards mentioned into this 11th commerce syllabus. Some accounting standards, Council of Institute of Chartered Accountant of India has so far issued the 31 accounting standards. The Chartered Accountant of India issued the 31 accounting standards. Some of these, the accounting standards are, we see into this lecture. Accounting standard AS 1. अकाउंटिंग स्टैंडर्ड AS क्या है, उसके बाद में इसको करेंगे. 9 कंट्री जो है, 9 कंट्री में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो किए जाते हैं और उस कंट्री द्वारा जो रिकॉर्ड्स मेंटेन किए जाते हैं अकाउंटेंसी का, वो रिकॉर्ड्स इस स्टैंडर्ड अंतर्गत वहां राइट डाउन किया जाता है. इनटू दिस लेक्चर वी सी द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो आपके हैं. Accounting standards. Accounting standard into short AS. 31st nearby 31 accounting standards. 31 accounting standards जो आपके हैं. We will see the accounting standard AS1. Accounting standard 1 जो आपका है, ये 1 के अनुसार टू डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी. जब अकाउंटिंग पॉलिसी आपको डिस्क्लोजर करना पड़ती है, तब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड AS द्वारा आप उसको डिस्क्लोजर करते हैं उस फॉर्म को. इसे डिस्क्लोजर द अकाउंटिंग पॉलिसीज which will apply the accounting standard 1. Accounting standards 2, the valuation of inventories. The valuation of inventories, we see the valuation of investment inventories with effect from 1st April 1999. 1st April 1999, the effect from the accounting standard AS2, AS1 with effect from 1st April with effect from 1st April with effect from WF for with effect from इस तारीख से 1st April 1993. अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स 2 जो आपका है, valuation of inventories with effect from valuation of inventories with effect from 1st April 1999. इसी तरह अकाउंटिंग स्टैंडर्ड AS3 टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लास्ट AS30. जो टोटल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आपके, उसमें से जो some important standards we will see into this our 11th course. Accounting standard 4, accounting standard 6 for depreciations. Accounting standard subject, accounting standard 4, 5 is 6 is depreciation. Accounting standard 6, 7 for construction and contract. Accounting standard 8
for research and development. Accounting standard 9, the revenue recognitions, the companies and other effect from 1st April 1993. Accounting standard 10, accounting for fixed assets. Accounting standard 12, ये जो है accounting for government grants with effect from 1st April 1994, and accounting standard investments are for effect from 1st April 1995, and accounting standard 22 is account for tax on income. That is total accounting standards we will see into this accounting standard books. So into this accounting standards, AS 13 account for investments, and ये total जो अकाउंट है AS से लेकर AS 31 अकाउंट AS का फुल फॉर्म फॉर्म अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 31 जो आपके हैं ये आपके however the accounting standard 11 has been mandatory with effect from 1st April 1995. So we should follow the rules of accounting standards. Accounting standards जो आपके होते हैं in India, the accounting standards is issued by Institute of Chartered Accountant. Issue that standards. The Council of Institute of Chartered Accountant of India constitute the Accounting Standards Board ASB 21st April 1977 established in India. So into this accounting standards, due to globalizations, ये जागतिकीकरण की वजह से क्या हो रहा है, उसमें maintaining our accounts. The main function of this accounting standards to formulate the different accounting standards after taking into the consideration of applicable laws and business enterprises, business environment बोल सकते हैं आपसे. So due to the globalizations, the accounts prepared in India must be compatible with accounting prepared in other countries. So accounting standards, a smaller businessman unit are allotted, जिस छोटे बिजनेसमैन आपके होते हैं, the small business unit is allowed to continue using accounting standards. In future, it is expected that all business entities in India will migrate to the India accounting standards. So all business, small and large businessmen now use that accounting standards and maintain their records. Some accounting standards, Council of Chartered Institute of Chartered Accountant in India has so far issued the 31st accounting standards. Into this standards will be maintaining our accounting records. ये आपके accounting standards या इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड IMFSR द्वारा आप क्या करते पूरे आपके अकाउंट्स पे मेंटेन करते रहते हैं. सो द प्रोप्राइटर जो आपका होता है, इट इज वाइडली एक्सेप्टेड बाय प्रिपेयरिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करने के लिए यू शुड बी फॉलो द रूल्स ऑफ AS अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एंड IFRS के जो रूल्स आपके हैं वो रूल्स आप फॉलो करके आपके अकाउंट्स आप डिस्क्लोज करते हैं, आपके अकाउंट्स आप मेंटेन करते रहते हैं. सो नीड फॉर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की नीड क्यों है, जरूरत क्यों है, नीड फॉर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड. अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की नीड क्या है? फर्स्ट नीड जो आपके है, फर्स्ट नीड इज गोइंग टू प्रमोट द बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट. बेटर अंडरस्टैंडिंग of financial statement, to promote a better understanding of financial statement. The first need. Second need, to help the accounts to follow the uniform procedure and practices. सभी अकाउंट एक सर के आना चाहिए सभी इंस्टीट्यूट के, इसलिए यूनिफॉर्म टाइप एक रिकॉर्ड्स अपना रहना चाहिए. इसलिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की नीड आपकी जरूरत आपकी होती है. टू हेल्प द accountants to follow the uniform procedures and practices, to facilitate the meaningful comparison and financial statement of two and more entities या बिजनेस जो कंसर्न्स आपके होते हैं, to enhance the reliability of financial statements and to meet the legal requirement effectively. That is the need of our accounting standards, to formulate all our business entities.
So uniform procedure and practices, that is the main aim of that we should maintain our records into this accounting standard. Accounting standard is worldwide and internationally all worldwide concepts are acceptable in accounting standards. इसलिए ये नीड्स उसकी है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की टू प्रमोट द बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट. ये पहली नीड आपकी है. दूसरी नीड जो आपकी है उसकी टू हेल्प द अकाउंटेंट्स टू फॉलो द यूनिफॉर्म प्रोसीजर एंड प्रैक्टिसेस. जो अकाउंटेंट होते हैं ये फॉलो द रूल्स यूजुअल यूनिफॉर्मिटी. एक सभी का रिकॉर्ड सबका होना चाहिए, सभी इंस्टीट्यूट का, सभी बिजनेस एंटिटीज का. इसलिए द हेल्प द अकाउंटेंट्स, अकाउंटेंट को हेल्प करता है, मदद करता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स. उस स्टैंडर्ड्स द्वारा आप क्या करते हैं, पूरे आपके अकाउंट्स के रिकॉर्ड्स आप मेंटेन करते रहते हैं. इसलिए टू हेल्प द अकाउंटेंट टू फॉलो द यूनिफॉर्म प्रोसीजर एंड प्रैक्टिसेस, टू फैसिलिटेट द मीनिंगफुल कंपैरिजन इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ टू एंड मोर एंटिटीज. वी कंपेयर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एक से ज्यादा जो बिजनेस आपके होते हैं, उद्योग जो आपके होते हैं. टू फैसिलिटेट द मीनिंगफुल कंपैरिजन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ two and more entities, enhance the reliability of financial statements, and to meet the legal requirement effectively. So that is the need for accounting standards. इसलिए accounting standards की जरूरत आपको होती है. इसलिए we should maintain, all businessmen are maintaining their records into this standards. इस standard द्वारा पूरे records होते हैं. Financial statement जो है, financial record जो है should be maintained by every businessman into this accounting standard. So accounting standards in India start from 21st April 1977, which we established the accounting standard board in India. The chartered accounting जो institute आपकी है in India, the standards of accounting issued by Institute of Chartered Accountant. Chartered Accountant Institute जो है ये इसके जो standards है वो issue करती रहती है. उसमें 11 में जो आपको study करना है वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 से लेकर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 31 स्टैंडर्ड्स विच वी लर्न इनटू दिस सिलेबस. तो फर्स्ट जो आपका है डिस्क्लोजर द अकाउंटिंग पॉलिसीज, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सेकंड जो आपका वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंटरीज, अकाउंटिंग थर्ड जो आपका तो फॉलो द कैश फ्लो स्टेटमेंट्स, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 जो है डिप्रिसिएशन ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 8 जो है अकाउंटिंग फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9 जो आपका रेवेन्यू रिकग्निशंस, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो आपका दिया हुआ एज पर टेक्स्ट बुक. अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 इज अकाउंट फॉर फिक्स्ड एसेट्स, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 12 इज फॉर अकाउंट फॉर गवर्नमेंट ग्रांट्स, एंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 22 अकाउंट फॉर टैक्स ऑन इनकम. जो पॉलिसी आपकी है टैक्स ऑन इनकम इज अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड्स द टैक्स एक्सप्रेस फॉर द पीरियड ऑफ कंपैरिजन द करंट टैक्स एंड डिफर्ड टैक्स शुड बी इंक्लूडेड द डिटर्मिनेशन ऑफ द नेट प्रॉफिट एंड नेट लॉस ऑफ दैट period of the period. We should maintain our records into these accounting standards. ये था आपका accounting standards and IFRS. ये जो इंस्टीट्यूट है, इस इंस्टीट्यूट द्वारा इसी कोड एंड कंडक्ट में should follow the rules when you write your accounting statements, you write your accounting records. So Chartered Accountant of India issue that standards. जो आपने इशू किए Chartered Accountant of India ने in India standards जो आपके है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, द स्टैंडर्ड्स ऑफ अकाउंटिंग इज इशू बाय CA, चार्टर्ड अकाउंट ऑफ इंडिया, 21 अप्रैल 1977. तो इसके ऊपर जो आपको क्वेश्चन आता है एग्जाम के अंदर, ये ऑब्जेक्टिव में आपको स्टैंडर्ड्स के बारे में पूछा जा सकता है. अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड्स क्या होता है, फुल फॉर्म ऑफ IFRS क्या होता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा जो स्टैंडर्ड्स है नियर बाय 31 स्टैंडर्ड्स आर इशू बाय चार्टर्ड अकाउंट ऑफ इंडिया, यह आपको अपने एग्जाम में लिखना होगा. तो स्टूडेंट ये था आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स. तो नेक्स्ट वीडियो जो आपका है उसमें देखेंगे अकाउंटिंग इक्वेशन जो आपके हैं उसके बारे में डिस्कस करना है, और डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम्स इसके बारे में, द मीनिंग एंड फंडामेंटल ऑफ डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम, इसके बारे में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में. तो ठीक है, रुकते हैं यहाँ पर. ये था आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स. थैंक यू.